dars aujourd'hui. Donc, dernièrement, dans le dars précédent, Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu nous avait dit que si l'on veut connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais, l'étude des attributs d'Allah serait suffisante pour cela. Donc, si l'on réfléchit assez sur les attributs d'Allah, alors tout ce qui sera en concordance avec les attributs d'Allah sera considéré comme une vertu. Et tout qui ira à l'encontre des attributs d'Allah serait considéré comme un vice, un péché. Le Khadam Muslim, il élabore sur ce sujet. Il dit « D'aucuns distinguent certes la vertu du vice. Or, malgré leur connaissance partielle de prescriptions et des interdits, leurs actions ne s'y conforment pas. » Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui savent ce qui est bien et ce qui est mauvais, mais ils n'arrivent pas à suivre le bien et à ne pas commettre le mal. Il dit comment remédier à cette situation? Comment mettre en œuvre les actes recommandés par Dieu et éviter ses interdits, conformément à notre souhait, afin de purifier notre âme et obtenir l'irfane ilahi. Ceux qui n'entreprennent aucun effort pour acquérir cette dernière n'ont aucune connaissance des attributs divins. Il est nécessaire de leur fournir la connaissance de Dieu. Mais vu que notre sujet concerne ceux qui croient déjà en lui, qui suivent l'islam et désirent la proximité et la perception divine, nous focaliserons notre attention sur ces derniers et tenterons d'enlever les obstacles entravant leur voie. Donc, comment cultiver en soi l'attribut divin? L'unique moyen pour obtenir l'irfan ilahi, la reconnaissance d'Allah, est de cultiver en soi le caractère divin. Mais les attributs de Dieu ne peuvent naître en l'homme tant qu'il ne s'est pas débarrassé le cœur du mal. Le péché est en effet la première entrave dans l'acquisition de l'irfan ilahi. Donc, Azul dit que le péché est en effet un obstacle pour que l'homme se rapproche d'Allah et qu'il commence à reconnaître Allah. Il dit maintenant qu'il y a 3 types de péchés. Il dit l'on commet des transgressions pour 3 raisons. De prime abord, d'aucuns sont inconscients de certaines offenses et en sont coupables par ignorance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'ils sont en train de commettre un péché. Tout le monde connaît les péchés majeurs à éviter, à l'instar du vol, du pillage, de l'adultère, du mensonge. Donc tout le monde sait que voilà, le mensonge, le fait de voler quelqu'un, etc., c'est un péché. Or, une maison incomplète n'est jamais sûre. Donc Razou, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de nous dire? L'exemple qu'il nous donne, c'est que c'est bien, on connaît que les grands péchés, par exemple voler, tuer ou commettre l'adultère, sont un péché. Mais tant qu'on n'a pas une connaissance globale des choses, on ne pourra pas arriver au succès. Il dit une maison incomplète n'est jamais sûre. Si elle possède des murs, mais pas un toit, elle ne protégera pas de la pluie et du soleil. Toit, fenêtres et lucarnes sont autant d'éléments nécessaires pour la compléter et la rendre sûre. De même, il est impossible de se purifier l'âme complètement sans veiller à tous les aspects des péchés. Certains sont si cachés qu'ils sont imperceptibles sans une étude minutieuse et des efforts colossaux. Toute œuvre comprend des normes protectrices et des normes décoratives. Ces dernières sont superflues et leur absence ne change pas grand-chose, mais l'œuvre sera imparfaite sans les mesures de protection. Si l'on construit une maison sans installer les portes, les fenêtres ou les lucarnes, elle ne sera pas sûre. Mais si ces dernières sont présentes, mais qu'on ne la carrelle pas ou qu'on ne la peigne pas, elle sera sans doute laide, mais sa sécurité ne sera point compromise. Ça veut dire qu'il y a certains éléments qui sont essentiels. D'accord? Tout comme dans une maison, une porte et des fenêtres, etc. C'est des choses qui sont essentielles. Mais la déco interne, elle est essentielle, mais ce n'est pas quelque chose qui va être très dangereux pour vous. D'accord? Donc de la même manière, il dit que toute œuvre comprend des normes protectrices et des normes décoratives. Les normes décoratives ne sont pas tellement importantes, mais les normes protectrices doivent être bien construites, etc. Il dit les efforts de celui ignorant certains vices seront vains, même s'il les chine matin et soir.
car il néglige les actions nécessaires et celles à éviter. Il serait ridicule de tenter d'atteindre la perfection en pareil cas. Le succès ne sera pas garanti sans prendre en considération tous les aspects de l'entreprise. Si un individu néglige certains vices, il ne réussira jamais. D'où la raison d'être au courant de toutes les formes de transgression. Donc la première personne, c'est qu'elle est ignorante. Elle ne sait pas. Donc une connaissance globale est requise. La deuxième cause du péché est la suivante. En dépit d'en avoir la connaissance, l'on est porté par ses émotions au point de tout oublier et de sombrer dans le mal. À titre d'exemple, on connaît l'interdiction du mensonge, mais l'on ment au moment venu pour le regretter par la suite. De même, l'on est conscient qu'injurier autrui est un mal, mais l'on ne se maîtrise pas au moment opportun pour ensuite sombrer dans les remords. Dans le premier cas, l'on ignore ce qu'est le péché. Dans le deuxième cas, malgré le savoir acquis, l'élan est si fort sur le coup qu'on perd toute notion de transgression et l'on est pris de vifs remords par la suite. Donc la première catégorie de péché, c'est l'ignorance, que vous ne savez pas. La deuxième, c'est que vous savez que c'est un péché, que de mentir, c'est un péché, d'insulter les gens, c'est un péché. Mais au moment, sous les émotions, vous êtes pris par l'émotion que vous oubliez et que vous commencez à insulter, etc. Maintenant, il existe aussi un troisième cas de figure. Souvent, au moment de l'exécution, on est conscient de l'immoralité de l'acte, mais on le commet quand même. À titre d'exemple, l'on sait que mentir est mal. Avant de proférer un mensonge, l'on est conscient de s'attirer le courroux divin, la colère divine. L'on est conscient l'on est conscient de s'attirer la colère divine, mais on finit par mentir quand même. L'on sait que la médisance est un mal honni par Dieu, mais l'on ne s'en abstient pas sur le coup et l'on en est coupable. Ce sont là trois obstacles empêchant l'homme de pratiquer la vertu. Il est nécessaire de s'en préserver afin de faire le prochain pas pour acquérir l'irfan ilahi. Et Inch'Allah, dans le prochain dars, nous allons aborder le remède à ces trois péchés, ou à ces trois problèmes et à ces trois mots. Inch'Allah. In the previous dars, we studied in the book Irfan Ilahi that Hazur has mentioned that whatever anything which will be in accordance with the attributes of God is goodness, and anything which contradicts the attributes of God is evil. He said that this is a general sense that a person needs to know, and the more we are going to contemplate on the attributes of God, we will know what's good and what's evil. So he says, however, such people are also found in this world who have knowledge of good and evil to an extent. But despite knowing the details of the injunctions and prohibitions, they cannot act according to them, according to these things. What is the, so basically Hazur is saying many people know what's good and what's bad, but they don't get success. They still end up either committing the evil and not doing the goodness. Hazur said, what is the remedy? What method can these people adopt so that according to their wish, they act upon the deeds that Allah enjoins, and to be granted the ability to refrain from the thing that Allah Ta'ala forbids us to do, so that their soul can be purified and that they can be able to attain the cognizance of God, the Irfan Ilahi. Such people who do not make any effort to attain Irfan Ilahi, those are just like that. Those who have no knowledge about the attributes of God, it is important that they be given the knowledge of God. But since at this time, Hazur said that the audience of my treatise is those very people who believe in God and are followers of God, and they wish to attain the nearness of Allah. For this reason, we will at present concentrate on their affair, and we will see what obstacles are on their way and how can these obstacles be removed. So now, Hazur said, as I've already mentioned, the only means of attaining the cognizance of God is to develop the qualities of God in you. And the qualities of God cannot be developed in man until at a time when his heart
is cleansed of all evil. Therefore, the first obstacle in the way to attaining Irfan Ilahi is the perpetration of sin. So Hazur says that we need to clean our heart from sin to attain the cognizance of God. Now Hazur mentioned three types of perpetration of sin. He says the perpetration of sin is of three types. There are three types of people who commit sin. The first one is in a way that some people don't even know about some evils. And because of lack of knowledge, they commit them. So basically ignorance, people who don't know and they commit the sin. He says, Hazur says, there is no doubt in this that everyone knows the great and known evils. Everyone knows that robbery, adultery, lying, etc., are evils, and they should be guarded against. But just as no building can be safe until all its ties are completed, we need to be aware of everything. You cannot just say that I know that stealing or robbing someone or committing adultery is bad and that's enough. No, you need to know the whole picture, the global picture. Hazur gives an example. He said, if someone builds a 4-wall house and does not put any roof over it, then the house cannot be safe from rain and sunshine. But for safety and completion, it is necessary for the roof to also be there. And there should also be ventilators and windows. Likewise, no human being can have a completely pure soul until he puts his focus on all sides of evil. And some evils are so hidden that apart from a very deep and delicate study and without hard work, they cannot be known. For every work, there are those things through which it is secured and other through which its beauty is kept in view. So Hazur says that there are two things. For example, when you build a house, you have the how secure the house is, if the walls are properly made, the windows are there, etc., etc. And then there is the internal decoration part. Hazur says the beauty factor, if the beauty factor is left out, there is not much harm, but if the security factor is left out, then that thing is termed as incomplete. For example, if a house is being built and its doors and ventilators and windows are not fixed, then it will not be termed as completed. But if it is not floored and not plastered, then it will not be beautiful, but flaw in security will not be apparent. Thus, such a person who is not aware of some evils and he tries that he becomes successful, he can spend all day and night but can never become successful. Because in this way, some of the things which are necessary to put his focus on, his focus will not be on them. And the ones he should refrain from, he shall not be able to refrain from them. In such a situation, if trying to be complete is not wrong, then what is it? As long as all the sides are not focused upon, until then there cannot be success. So if anyone becomes unaware of some evil, then he shall never become successful. That is why the most important thing is that man should be aware of evil. So as Hazur said, the first category of people are those who are ignorant about certain evils. They only know partly about the big, you can say, sins, robbery, adultery, etc., right? But you need to know, you need to have the knowledge of the globality, right, of the matter. Now Hazur proceeds to the second one. Hazur says, the other cause or the second cause of the perpetration of sin is that though man is aware of sins, but by the passage of time, he gets so excited that he remembers nothing and commits evil. Or basically in the heat of the moment. So he knows that this is a sin, but in the heat of the moment, he gets so excited that he forgets that he shouldn't have said this or he shouldn't have done this. For example, someone knows that he should not tell lies, but at certain times he tells lies, and after that he regrets it. Likewise, someone also knows that swearing is evil, insulting someone is evil, but he insults and after that he feels remorseful over this action of his. So the first obstacle is that the evils were not known, and the second obstacle is that though the evils are known, but in the heat of the moment, such an man is in such an excitement
that for a moment he forgets all of his knowledge, and after perpetrating this, he becomes regretful. Now the third one, who says the third situation of perpetrating sin is that at times man does realize that so and so action is evil, and at the time of committing it, he remembers that this is an evil act. Still, he becomes adamant to do it. For example, someone knows that lying is evil, and when he's about to lie, he's aware of it. And he knows that if he tells a lie, God will be displeased with him. But yet, he still lies. Likewise, backbiting is also understood to be an evil, and God dislikes it. But yet, still, in the heat, when it should be avoided, it's not avoided. Hence, these three obstacles are faced by man in avoiding evil, and it's extremely necessary for there to be a distant from he need to be distant from these three obstacles, but that those other steps can be taken through which the attainment of Irfan Ilahi can become possible. So Hazur mentioned three types of people. First, the ignorant one. The second one is those people who know, but in the heat of the moment they forget that it was an evil. The third one are those people who know that it is evil. Even at the time when they are doing it, they know that Allah Ta'ala will be displeased with them, but they still do it. So inshallah, in the next dars, we will understand and study how we can save ourselves from these three types of evil. पिछले दर्स में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, अगर उसका हम इल्म हासिल करें तो हमें पता लगेगा कि जो चीज़ अल्लाह ताला की सिफात के मुताबिक है वो नेकी है, और जो अल्लाह ताला की सिफात के खिलाफ है वो बदी है. जो इंसान उसकी गुनाह को पहचानता रहता है उन सिफात की, तो उसको पता लगता जाता है कि ये नेकी है और ये बदी है. हज़ूर फरमाते हैं बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मालूम नहीं होता कि नेकी क्या है और बदी क्या है, इसलिए अक्सर औकात वो गलती से बदी को नेकी समझ लेते हैं और नेकी को बदी. इसकी वजह यही होती है कि उन्हें मालूम नहीं होता कि खुदा की सिफात किस बात की मुतकाजी हैं. हज़ूर फरमाते हैं मगर ऐसे लोग भी दुनिया में पाए जाते हैं कि जिनको नेकी बदी का इल्म होता है और वो एक हद तक बावजूद अवामिर व नवाही की तफसील मालूम होने के उनके मुताबिक अमल नहीं कर सकते. उनका क्या इलाज? यानी कि ऐसे भी लोग हैं जिनको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, लेकिन वो फिर भी कर लेते हैं, तो उसका क्या इलाज है? ये लोग क्या तरीक़ इख्तियार करें कि उन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक खुदा ताला के बताए हुए अमाल पर अमल करने की और उसकी मना की हुई बातों से इज्तनाब करने की तौफीक मिले, ताकि उनके नफ्स का तज़किया हो और उन्हें इरफान इलाही हासिल हो सके. ऐसे लोग जो इरफान इलाही हासिल करने की कोशिश ही नहीं करते, वो तो ऐसे होते हैं जिन्हें खुदा की सिफात का इल्म नहीं होता. उनके लिए ज़रूरी है कि उनको खुदा का इल्म दिया जाए. मगर चूँकि इस वक्त हमारे मज़मून के मुखातिब वही लोग हैं जो खुदा को मानते हैं, इस्लाम के पैरों हैं और चाहते हैं कि खुदा का कुर्ब और मारिफत हासिल हो, इसलिए सरेदस्त हम उन्हीं के मामले पर गौर करेंगे और देखेंगे कि उनके रास्ते में क्या रोके हैं और वो किस तरह दूर हो सकती हैं. तो फरमाते हैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ, इरफान इलाही के हसूल का वाहिद ज़रिया अखलाक इलाहिया अपने अंदर पैदा करना है, और सिफ़ात इलाहिया उस वक्त तक इंसान के अंदर पैदा नहीं हो सकती जब तक पहले इंसान का कल्ब बदियों से साफ ना हो. पर सबसे अव्वल रोक इरफान इलाही के हासिल होने में इर्तिकाब गुनाह है, यानी कि हमें अपने दिल को गुनाह से पाक करना होगा. अब हुजूर तीन किस्में बयान फरमाते हैं इर्तिकाब गुनाह की. हुजूर फरमाते हैं इर्तिकाब गुनाह तीन तरह का होता है. अव्वल इस तरह के बाज़ लोगों को बाज़ बदियां मालूम ही नहीं होती और ला इल्मी से वो उनके मुर्तकिब हो जाते हैं. इसमें कोई शक नहीं कि मोटी मोटी और मारूफ बदियां तो हर एक को मालूम होती हैं. हर एक जानता है कि चोरी, डाका, जिना, झूठ वगैरह बुराइयां हैं और उनसे बचना चाहिए. लेकिन जिस तरह कोई मकान उस वक्त तक महफूज नहीं हो सकता जब तक हर पहलू से मुकम्मल ना हो, अगर कोई चारों दीवारें बना दे और ऊपर छत ना डाले
تو مکان بارش اور دھوپ سے محفوظ نہیں رہ سکتا، بلکہ محفوظ اور مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ چھت بھی ہو، روشن دان اور کھڑکیاں وغیرہ بھی ہوں۔ اسی طرح کوئی انسان پورے طور پر پاک نفس نہیں ہو سکتا جب تک بدیوں کے تمام پہلوؤں پر اس کی نظر نہ ہو، اور بدیوں میں سے بعض ایسی پوشیدہ ہوتی ہیں کہ ان کا علم ایک دقیق اور باریک مطالعے کے سوا اور محنت شاقہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کام کے لیے ایک تو وہ امور ہوتے ہیں جن سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور دوسرے وہ جن سے اس کی زینت مد نظر ہوتی ہے۔ اگر زینت والے امور رہ جائیں تو کوئی زیادہ حرج نہیں ہوتا، لیکن اگر حفاظت والے رہ جائیں تو وہ چیز نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ مثلا اگر کوئی مکان بنائے اور اس کے دروازے اور روشن دان کھڑکیاں وغیرہ نہ لگائے تو وہ مکمل نہیں ہوگا، لیکن اگر فرش نہ کرے، پلستر نہ کرائے تو زینت نہیں ہوگی، حفاظت میں نقص نہیں واقع ہوگا۔ بس ایک ایسا شخص جس کو بعض بدیاں معلوم ہی نہ ہوں اس بات کی کوشش کرے کہ میں کامیاب ہو جاؤں تو ضرور وہ سارا دن اور ساری رات لگا رہے تو بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس طرح بعض امور جن کی طرف توجہ کرنا ضروری ہوگا اس کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اور جن سے بچنا ضروری ہوگا ان سے بچ نہیں سکے گا۔ ایسی صورت میں کامل بننے کی کوشش کرنا غلطی نہیں تو اور کیا ہے۔ جب تک سارے پہلو مد نظر نہ ہوں اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ بس اگر کوئی شخص بعض بدیوں سے غافل ہوگا تو وہ کمی کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری امر یہ ہے کہ انسان بدیوں سے واقف ہو۔ تو پہلی کیٹیگری لوگوں کی یہ ہے جو لا علم لوگ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نیکی ہے جو میں نے لازمی کرنی ہے، یا یہ بدی ہے میں نے اس سے بچنا ہے۔ اور جب تک ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں گے، اگر ہم ان کے علم حاصل نہیں کریں گے تو اگر ہم سمجھتے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس فرماتے ہیں دوسری وجہ ارتکاب گناہ کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں کا تو علم ہوتا ہے، مگر وقت پر اس سے ایسا جوش آ جاتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں رہتا اور وہ برائی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص جانتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن وقت پر بول دیتا ہے اور بعد میں پھر اس پر پچھتاتا بھی ہے۔ اسی طرح ایک شخص سمجھتا ہے کہ گالیاں دینا برا ہے مگر دے دیتا ہے اور بعد میں اپنی اس حرکت پر روتا ہے۔ تو پہلی روک تو یہ تھی کہ بدیاں معلوم ہی نہ تھیں، اور دوسری روک یہ ہے کہ بدیوں کا علم تو ہوتا ہے لیکن وقت پر ایسا جوش آتا ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے اپنا سب علم بھول جاتا ہے اور ارتکاب کرنے کے بعد کفی افسوس ملتا ہے۔ یعنی کہ اب پہلا یہ تھا کہ علم نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ علم ہے لیکن جوش میں آ کر اس وقت جو ہے وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ تو مطلب ان کے علاوہ ایک تیسری صورت ارتکاب گناہ کی یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ فلاں حرکت بدی ہے اور اس کا ارتکاب کرتے وقت اسے یاد بھی ہوتا ہے کہ یہ بدی ہے، مگر پھر بھی کر بیٹھتا ہے۔ مثلا ایک شخص کو علم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا برائی ہے، اور جب بولنے لگتا ہے اس وقت بھی جانتا ہے کہ اگر میں نے بولا تو خدا ناراض ہوگا، مگر پھر بھی بول دیتا ہے۔ اسی طرح غیبت کے متعلق سمجھتا ہے کہ برائی ہے اور جانتا ہے کہ خدا کو ناپسند ہوگی، لیکن پھر بھی وقت پر رک نہیں سکتا اور اسے نفس برائی کے ارتکاب پر مجبور کر دیتا ہے۔ غرض یہ تین روکیں بدیوں سے بچنے میں انسان کو پیش آتی ہیں، اور ان تینوں روکوں کا دور کرنا اس کے لیے ازبر ضروری ہے تاکہ وہ دوسرے قدم اٹھا سکے جن کے ذریعے سے عرفان الہی کا میسر آنا اس کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے گناہ ہیں یا کیٹیگریز ہیں لوگوں کی جو گناہ کرتے ہیں، اور جب تک ہم ان کا علاج ہمیں نہ ملے ہم عرفان الہی حاصل نہیں کر سکیں۔ جیسے کہ حضرت مسلم نے فرمایا ہے کہ دل کو بدی سے صاف کرنا ہوگا، گناہ سے پاک کرنا ہوگا تاکہ عرفان الہی کی پہلی سیڑھی پر انسان قدم رکھے۔ تو انشاءاللہ ہم ان کا علاج جو ہے اگلے دروس میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔